Hello everyone. I hope you can all hear me and welcome to another session of Python. And today we are going to discuss object oriented programming in Python. And I hope you are all uh, revise the concepts that we learned in all the previous classes, and then we are going to start with our content soon. But before that, let's wait for 1 or 2 minutes for more people to join in. And I'll just be free, introduce myself. So I'm Archie Kirk, and I've been working in the field of data analytics and science for last more than 5+ years, and overall I have got 7+ years of experience in IT industry. And we at Infinity Data Academy, we are focused on providing you all the up to date content related to Python and data science, and make sure that you to help you in your upskilling journey, because data science is the need for today. And it's like it's like join the revolution or get left behind. So yeah, and let's wait for a few more people to join in. And yeah, if you have any doubt or any queries before during this session, please feel free to put it in the live chat, and I will look at it from time to time to answer your queries, or somebody from my team will answer your queries directly in the chat itself. And yeah, then let me just start. We will start with the quick revision of last class session, and then we are going to continue with the today's topic, that is object-oriented programming in Python. And then let me just share my screen. All right. So this yeah so this is what we discussed in our last class. So last class में हमने discuss किया था about the decorators, and saw some examples of Python decorators and their notations. And apart from that, second topic that we discussed was related to exception handling. Python में if you have any error और कोई exceptions आता है, उसको आप कैसे handle करते हैं, and how to make sure that your code is error free. And after that, we discussed basics of Python. Classes क्या होती है Python में, and then classes से related concepts, that is the self keyword to create a class, then the static method and class method, and also different methods of class कैसे define करते हैं, and the attribute. And just created one sample employee class, and उसका एक object create किया and to get its detail, and then created another object to get that person's detail. And so yeah, this is what we discussed in last class. I'm now coming to oops. So oops is like class में like we oops is object oriented programming basically. And so इसके there are four main concepts of this oops programming paradigm, that is polymorphism, encapsulation, inheritance, and data abstraction. So ये चारों concepts आज हम discuss करेंगे. And to implement this oops, we first needed to discuss this concept of class. So just quickly to refresh your memory, like class is basically a blueprint of an object, or it provides overall, if you are doing creating a building, so building का एक blueprint create किया जाता है. So same way, class is a blueprint, and of which we can create multiple objects. So object is basically a user defined variable. So अभी तक हमने जितने भी not variable, sorry, user defined data structure. So अभी तक हमने जितने भी data structure use किए थे, that were all inbuilt. So object is totally user defined, जिससे related attributes and methods हम define कर सकते हैं in our class. And class in itself में कोई हम data store नहीं करते हैं. So all the storage of data that is that is there, that is always in object. So कोई भी हमने object create किया उस class का, so the all the data will be stored in that object memory, right? So जैसे मैंने एक object create किया था, that was I entered my details, and so इसके related जो भी data है, that will be stored in the memory of that object.
and class will only contain its blueprint, you can say, only the main attributes and methods and all those details उससे related जो data है वो object में create होता है. And right, so आज हम today we will discuss these four concepts that is related to the object oriented programming, and these concepts are like very heavily used in your creation of website or any real world applications. So make sure to uh, keep your focus to here during the class, and कोई भी आपको doubt आता है please add it in the live chat and I will try to answer, or somebody from our team at Infinidata will try to answer your queries, right? And so I'll move to the day 7 class now. So we did a quick revision, and then we are going to discuss each of these concepts with their code example, like very simple code example. To save some time, I have written down the जो भी code example है. I've written down this in the notebook itself, so that code written right down करने में there is no wastage of time, and I can interact more with you guys for your queries and doubts. Right? Let me just look at the live chat. All right, all clear there. And now let's start with the oops concept. सबसे पहले हम start करते हैं inheritance. So out of all these four concepts, inheritance जो है that is the easiest one to understand in case of in terms of real world terminology. Like inheritance, if you think about inheritance, what is inheritance? Like from parents, जो भी एक kid है, they inherit many things. Like they inherit their features or their like eyes, nose, or some habits, some or some properties. So like any kid, they inherit like multiple things from their parent. So or in the Python in or in any programming language, inheritance का concept same है. So basically एक class है, एक class जो है वो किसी और क्लास से इट कैन इनहेरिट लाइक सर्टेन प्रॉपर्टीज और सर्टेन फीचर्स. सो जो पेरेंट क्लास है उसको बेसिकली हम बोलते हैं बेस क्लास, एंड जो एक चाइल्ड क्लास हो गई जो इनहेरिट कर रही है फीचर्स, दैट इज द डिराइव्ड क्लास. सो डिराइव्ड क्लास क्या है? वो बेस क्लास से मल्टीपल फीचर्स और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स इनहेरिट कर रही है टू यूज इट एज इट्स ओन. सो उसके so I'm just going to discuss types of inheritance quickly, and then we'll go to the example, code example for this. So there is this single inheritance. So in case of single inheritance, क्या होता है? जो derived class है, उस वो सिर्फ एक single parent से अपनी सारी feature properties inherit कर रही है. So single parent as in like you can see एक amoeba है, like it only has one parent. एक amoeba it splits into two and basic, or it creates a new child. So that is basically like single parent class से एक child class create हो रही है. So that is a single inheritance. Now multi level inheritance क्या होती है? This is like you have one parent, then उसके ऊपर you have the child class, then this child class is parent of second child class. So you have like different layers of the inheritance. So that is different levels of inheritance. सो वो होता है दैट इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. आपने एक बेस क्लास बनाई, इस बेस क्लास को इनहेरिट किया सेकंड क्लास ने, दैट इज द सेकंड फर्स्ट डिराइव्ड क्लास, एंड इस डिराइव्ड क्लास को फर्दर इनहेरिट किया द नेक्स्ट डिराइव्ड क्लास ने. सो जो सेकंड लेवल पे आपने डिराइव्ड क्लास क्रिएट करी, वो बेसिकली ऊपर की दो क्लासेस से फीचर्स प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही है, राइट? एंड देन वी हैव द हायरार्किकल इनहेरिटेंस. सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है? सो जो भी एक पेरेंट क्लास है, सो इट हैज मोर देन वन लाइक एक मोर देन वन डिराइव्ड क्लास जो है वो उस पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकती है. सो यू हैव एक बेस क्लास आपने क्रिएट कर दी लाइक बर्ड, एंड दैट bird class can be inherited by multiple birds. So आपने further उसको categorization करनी है like crow, sparrow और eagle. So these three are the specific types of bird. लेकिन इनकी base class हमने single बनाई है, that is the bird class. So that is the hierarchical inheritance. And then we have multiple inheritance. So multiple inheritance में क्या होता है? More
जो like in our case, in case of humans, we have inheritance from more than one base class. So basically जो भी हम inherit कर रहे हैं अपने features or anything, that is from more than one parent. So we have like two parents, and so उन दो parents से we are inheriting everything that creates a unique its own base class, derived class. So that is the multiple inheritance, राइट. सो अभी जो हम एक एग्जांपल देखेंगे इनहेरिटेंस का, दैट इज गोइंग टू बी simple inheritance of a single level inheritance, single inheritance, right? And इस केस में in for inheritance we can use a super function. So एक super function क्या होता है? This is basically आपको अगर बेस क्लास के कुछ फीचर्स और एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं, सो यू कैन यूज सुपर इन द डिराइव्ड क्लास. सो इसका हम यूसेज देखेंगे इन आर एग्जांपल, and then it will make more sense to you, right? So let me just go through this जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है. दिस इज वेरी सिंपल इजी टू फॉलो एग्जांपल, बट आपको कोई डाउट है, प्लीज ऐड इट इन द चैट एंड आई आंसर योर क्वेरीज है, राइट. सो यहाँ पे इफ यू सी हमने दो क्लास बनाई है. सो एक है एनिमल क्लास. फर्स्टली ये एक बेस क्लास हो गई है. एनिमल क्लास में बेसिकली हमने इनिशियलाइज क्या किया, दैट इज द नेम ऑफ एनिमल. सो कभी भी आप एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो आपको बेसिकली उसका नेम पास करना होगा. एंड देन एक छोटा सा उसमें हमने फंक्शन क्रिएट किया, मेक साउंड, दैट इज जेनेरिक एनिमल साउंड. सो बेसिकली कोई भी एनिमल है एंड दे can speak, and if they can speak, so they will just make their own generic sound, right? And उसके बाद हमने इसका डिराइव्ड क्लास बनाई है, दैट इज द डॉग. हम डॉग के अलावा कैट भी बना सकते हैं. वी कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ इनहेरिटेड डिराइव्ड क्लास जो एनिमल किंगडम में है, एंड दैट कैन inherit the properties of animal. इसमें हमने सिंपल मेक साउंड की है. वी कैन हैव मल्टीपल मेथड्स है, लाइक कैन रन, कैन फ्लाई, दोस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट. सो कोई भी क्लास को इनहेरिट करने के लिए इन पाइथन व्हाट वी डू इज, जैसे वी क्रिएटेड दिस क्लास डॉग एंड देन ब्रैकेट में वी प्रोवाइड द नेम ऑफ द प्रीवियस, दैट इज बेस क्लास, ठीक है. एंड दिस इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सिंगल इनहेरिटेंस कर रहे हैं. इन केस वी आर डूइंग से मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट इज मोर देन वन बेस क्लास अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं, सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से एनिमल के अलावा हमने उसको अब बोल दिया मैमल. मैमल भी दैट इज अ प्रॉपर्टी, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि एक और मैंने क्लास इनहेरिट करनी है, सो हम उसको बेसिकली कॉमा लगा के वी कैन ऐड दिस. So that will be your multiple inheritance. And एक hierarchical का भी inheritance का example हम देखेंगे in one of the other cases, but for now let's go with this single level inheritance, right? So इसमें हमने क्या किया, एक dog class create करी and उसमें हमने animal को inherit किया. Now let's see, since dog का हमें जो साउंड मेथड है हमने लाइक वी नो दैट डॉट मेक्स द साउंड वूफ, सो उसका हमने स्पेसिफिक साउंड मेथड क्रिएट किया. एंड जब भी हम मेक साउंड क्रिएट करेंगे फॉर दिस डॉग क्लास, इट्स गोइंग टू कॉल दिस वन. जो मेक साउंड मेथड है वो डॉग क्लास का कॉल करेगा, बिकॉज दिस इज द डिराइव्ड क्लास, और ये ओवरराइड कर देगा एक एनिमल वाले मेक साउंड को, because that is the generic make sound in the animal class. In case अगर हम यहाँ पे make sound मेथड डिफाइन नहीं करते, लेट्स से अगर ये डिलीट होता, like ये अगर लेट्स से मैंने डिलीट कर दिया, सो उस केस में अगर हम एनिमल का ऑब्जेक्ट लाइक डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड देन वी आर कॉलिंग मेक साउंड, देन उस केस में ये वाला ये वाला जो मेथड है एग्जीक्यूट होगा. ओके. एंड देन सी इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट इनिशियलाइजेशन में वी आर पासिंग इन द नेम, breed and color. So dog के केस में if breed and color is the like specific to a dog and name can be general, so like कोई भी animal का आपने जो भी name दिया है, and so name क्या है, name को हमने क्या किया, we are getting the name from the parent class. So उसके लिए हमने क्या किया,
वी यूज दिस सुपर मेथड. सो सुपर मेथड क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, इट्स गोइंग टू टेक द इनिट ऑफ द पेरेंट क्लास, राइट. सो ये जो सुपर डॉट इनिट है, इट इज गोइंग टू कॉल द इनिट मेथड ऑफ योर एनिमल क्लास, एंड देन उसके अंदर नेम पास करेगा. सो द नेम विल बी इनिशियलाइज टू वट एवर आप डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए जो भी आप नेम देंगे, दैट विल बी द नेम क्लास. और वो यहाँ पे लाइक वी हैव नॉट डिफाइंड द नेम एज अ वेरिएबल डॉग में, बट वो एनिमल जो क्लास है उसका नेम यूज करेगा, राइट. सो लेट्स सी द एग्जांपल. लेट मी रन दिस सेल. और एक सेल रन हो गया. एंड सी, एक हमने बहुत ही लाइक वी जस्ट क्रिएटेड वन एनिमल generic that is, and we can give it any name. ठीक है. एंड देन उसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज द डॉग. दिस इज स्पेसिफिक टू डॉग. एंड देन वी पास्ड इन द नेम ऑफ दैट डॉग, टाइप एंड नो नेम. सो sorry, the name of the dog is buddy, and then उसका type is labrador, and then color is golden. So let's just पहले सिर्फ एनिमल जो क्लास है उसको रन करते हैं, एनिमल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है. सो सी, अगर हम एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका मेक साउंड जो कॉल करेंगे, एंड इट इज प्रिंटिंग दिस जेनेरिक एनिमल साउंड. एंड लेट्स रन दिस वन. अगर हम माई डॉग का मेक साउंड क्रिएट करते हैं, एंड देन इट्स गोइंग टू डू द स्पेसिफिक डॉग साउंड क्रिएट करेंगे. एक बार हम इसको डिलीट करके भी कर लेते हैं सो दैट इट्स मोर क्लियर टू यू. मैंने इसको डिलीट किया, एंड देन आई एम रनिंग दिस सेल. उसके बाद आई एम रनिंग दिस अगेन. और डॉग ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया दोबारा रिक्रिएट होगा, एंड देन इट्स गोइंग टू कॉल दी मेक साउंड. सो इस केस में देखो लाइक इट इज कॉलिंग द जेनेरिक एनिमल साउंड, बिकॉज दिस सेकेंड जो भी था हमने वो डिलीट कर दिया. सो अगर हम यहाँ पे कोई भी ओवरराइड नहीं करते हैं मेथड को, एनिमल क्लास को, सो इट्स गोइंग टू कॉल दी एनिमल क्लास में जो भी हमने मेथड कॉल किया है, right. So this is an example of inheritance. So it is like very useful कि आपने एक like you can inherit different features, properties एक base class से जो आप कर सकते हैं. And it's used one of the like main concepts of this object oriented programming. And I'm going to quickly look at the chat, and उसके बाद I'm going to move to the next concept, that is polymorphism. Okay, nothing in the chat.
Oh, okay. I think I was unmuted for the last 10 minutes. Sorry about that, and I just noticed it. But let me just repeat the last example again. Right? This was regarding the polymorphism. So, polymorphism में क्या होता है? Like you have one method. So, polymorphism में क्या है? There's a one method and उस based on कि हम उसमें like what object कौन से object से related है और what are the basis पे we can override that method, like we can have many forms of that method or based upon उसके parameters या objects से related we can have uh, yeah, we can call different types of different type of that method. So so just give you quickly give you an example. Bird, that is bird class. And bird class में क्या है? We have created method intro and flight. And intro and flight, this is a generic bird class जो हमने create करी है. And then we are creating two derived class, that is sparrow and ostrich. And sparrow and ostrich में we have created their own specific flight classes, flight methods, right? So same example हमने ऊपर देखा था. If you look at here कि हमने animal class के ली थी and then we had created a dog class. And dog class में we had the make sound method. So make sound method is used. So make sound method अगर हमने like if you are having some method in derived class जो कि base class में भी exist करता है, so object will give first priority always to derived class method. So this is called the overriding method, overriding here. So you can say this object से like जब भी हम method call कर रहे हैं, so it has like many methods, different methods जो है वो इसको refer कर सकता है. like मैंने ostrich class का जो object बनाया, इसके पास ostrich class का भी flight method है and then it has the flight method of its base class as well. But firstly it's going to call the method जो flight है, that is for ostrich class. And then उसके बाद it's going to call the next method. अगर flight method exist नहीं करता है in the ostrich, and then it's going to call the bird में in for the bird class का जो भी method है वो call करेगा, right? So इस एग्जाम्पल को आई विल क्विकली रन थ्रू. एंड सो इसमें क्या किया हमने? बेसिकली बर्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया. देन वी हैड मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पैरो एज वेल एज ऑस्ट्रिच क्लास, राइट? एंड देन हमने सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट बनाया था बर्ड क्लास का, उसका इंट्रो एंड फ्लाइट मेथड कॉल किया. सो यू कैन सी हियर देयर इसमें इंट्रो एंड फ्लाइट मेथड एग्जीक्यूट हुआ. दैट वाज द मेथड हियर. सो दैट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, राइट? जो कि हमने अभी रन किया. एंड जब हमने स्पैरो ऑब्जेक्ट का के से इंट्रो एंड फ्लाइट मेथड कॉल किया, सो यू कैन सी इंट्रो मेथड तो एनिमल जो बर्ड का एक बेस क्लास है उसका कॉल हुआ. बट द फ्लाइट मेथड जो है वो हमने जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्पैरो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, दैट इज द स्पैरो क्लास के अंदर जो मेथड है वो कॉल हुआ. सेम केस ऑस्ट्रिच क्लास में जो इंट्रो है वो तो इसने एनिमल का क्लास का मेथड कॉल किया. बट इन केस ऑफ फ्लाइट इसने इट कॉल्ड इट्स ओन मेथड, दैट इज द दिस ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाइट, ये वाला एग्जीक्यूट किया. सो एज यू कैन सी हियर जो एक मेथड है फ्लाइट, इसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं. बट बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्ट जो भी है वो रन टाइम पे इट गिव्स इट्स ओन प्रायोरिटी. सबसे पहली प्रायोरिटी ये डिराइव्ड क्लास के मेथड को देगा. एंड देन उसके बाद अगर डिराइव्ड क्लास में ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, देन इट्स गोइंग टू गिव दी प्रायोरिटी टू योर जो भी आपकी बेस क्लास में अगर सेम मेथड एग्जिस्ट करता है. वहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू गिव यू एरर. And then also another way of method overriding is जैसे यहाँ पे तो वी आर नॉट पासिंग एनी पैरामीटर्स. यहाँ पे आप कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रहे हैं. बट लेट्स से आपने यू आर यूजिंग सम आर्गुमेंट्स एंड एक मेथड में सेम फ्लाइट मेथड में एक मेथड में आपने सम स्ट्रिंग पास करी है एंड दूसरे में आपने कुछ इंटीजर वैल्यू पास करी है. सो बेस्ड अपॉन आपने क्या इनपुट पैरामीटर पास किया है ऑब्जेक्ट को, उसके बेसिस पे भी आपको
डिफरेंट फ्लाइट मेथड कॉल हो सकता है. सो बेस्ड दैट इज लाइक एक में आपने स्ट्रिंग पास करी है एंड दूसरे में इंटीजर फ्लोट वैल्यू पास करी है, एंड जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसमें आपने स्ट्रिंग वैल्यू पास करी. सो उस केस में फ्लाइट मेथड आपका वो वाला कॉल होगा जिसमें स्ट्रिंग पैरामीटर स्ट्रिंग आर्गुमेंट हम एज अ इनपुट ले रहे हैं. अदरवाइज अगर आप फ्लोट वैल्यू कुछ पास कर रहे हैं देन वो वाला मेथड कॉल होगा जिसमें आप फ्लोट वैल्यू एज अ आर्गुमेंट ले रहे हैं. So that is also an example of method overriding. And that is not specific to कि आप क्लास के अंदर ही क्रिएट करते हैं. वो हम like if you are writing in a scripting style also उसमें भी we can do this type of method overriding, right? And before moving to encapsulation, let me just quickly look at the chat. And I'm just taking 1 minute break here, and if you have any doubt feel free to put it in the chat. And also we have also if you want to connect with us at Infinity Data Academy, we have our LinkedIn channel and YouTube channel, and we are very active on all social media: Instagram, LinkedIn, YouTube. You can visit our website to connect with our team, to know more about us, and to get to know about different upskilling programs that we have and that we are launching. And also if you just want to have some sort of career guidance also, we will love to get in touch with you. So please feel free to visit our website and connect with us on LinkedIn. And LinkedIn pay our team, we post almost on daily basis or regular basis, like technological article that is related to some advancement or कोई भी upcoming information on different data science scenarios or use cases, business studies. उससे related we publish various no articles on regular basis on LinkedIn. So if you want to stay updated in this field, so make sure to follow our LinkedIn channel. And okay, with that let me just continue the class and move करते हैं next topic पे. So अभी तक we have discussed the inheritance and polymorphism, and next up we have is encapsulation. So encapsulation is basically, this is idea of that is जो भी हमारा data है, method है, that is we want to wrap that method and attributes everything within one unit. So class is a concept of encapsulation only. So just give me 1 second. Sorry about that. So yeah, let me just continue with what we are discussing. So encapsulation होता है. So basically ये idea है कि कोई भी हम data, method, features, attributes जो भी हम create कर रहे हैं, to wrap all of that within one unit. So अभी तक जो हम discuss कर रहे थे related to class and objects, so that is the idea of encapsulation itself. Like जो भी हम class है हमारी, एंड उसके रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट है. सो क्लास की जो भी मेथड्स, डेटा, एट्रीब्यूट जो भी उसमें हमने डिफाइन किया है, वो एक ऑब्जेक्ट के अराउंड रैप रहते हैं. लाइक दे आर लाइक ऑलवेज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. So encapsulation, so class is like the idea of that encapsulation, class and object. So we can, so also कि कोई भी एक क्लास है और उसमें इफ यू वांट टू लाइक हमें यूजर को जो भी मेथड एक्सेस कराना है, लाइक वी, और कोई भी डेटा एक्सेस कराना है, वी हैव आवर ओन लाइक इम्प्लीमेंटेशन. हम अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करके वी कैन गिव एक्सेस टू यूजर about that. So we can wrap our data, we can hide our data as per our uh, as per our usage and provide access to our user based on that. So इसमें भी, so let's see a quick example. So Python में we can create a private attribute, and uh, by default जो भी हम variable हम create करते हैं Python में, that is public. But to create make it a private, that is कि हम नहीं चाहते कि उस क्लास के बाहर, क्लास के ऑब्जेक्ट के बाहर कोई भी
क्लास के मेथड के बाहर कोई भी उस वेरिएबल या एट्रीब्यूट को एक्सेस करें, सो हम उसको प्राइवेट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो उसके लिए लाइक वी हैव दिस अंडरस्कोर अंडरस्कोर, लाइक दिस इज द सिंटैक्स बेसिकली, कि कोई भी अगर हमें वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करना है, सो उसके आगे हम वी कैन हैव टू अंडरस्कोर, एंड पाइथन विल कंसीडर इट एज अ प्राइवेट एट्रीब्यूट, राइट? एंड अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो भी आप एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे वो पब्लिक रहेंगे. सो ऑल्सो दिस इज प्रैक्टिस, लाइक लेट्स से मैंने अगर कोई लाइक मैंने कोई क्लास देखी कि दैट इज कोई किसी और डेवलपर ने बनाई है, एंड इफ आई सी सम वेरिएबल और मेथड विद अंडरस्कोर अंडरस्कोर, देन आई नो कि वो प्राइवेट एट्रीब्यूट है, दैट वी शुड लाइक वी शुड नॉट प्रोवाइड एक्सेस टू दैट प्राइवेट एट्रीब्यूट, एंड यूजर को नहीं प्रोवाइड करना है, राइट? सो राइट, सो इस एग्जांपल में वी हैव क्रिएटेड अ सिंपल डॉग क्लास, एंड उसमें इनिशियलाइज वी आर जस्ट इनिशियलाइजिंग द ब्रीड एंड कलर. बाय डिफॉल्ट जो है एज वी आर कीपिंग इट एज 0, एंड देन एक हमने लाइक गेट एंड सेट, वी हैव क्रिएटेड वन सेट मेथड जो बेसिकली क्या करता है, इट विल जो आपका आपने ये जो प्राइवेट एट्रीब्यूट क्रिएट किया है उसमें जो भी यूजर ने पास की है वैल्यू, वो उसको सेट कर देगा. सो बेसिकली इसमें हमने इफ यू सी जस्ट देयर इज अ वन इफ कंडीशन प्रोवाइड की है, दैट इज एज शुड बी ग्रेटर देन 0. आप एक और इसमें कंडीशन ऐड कर सकते हैं, एज शुड बी लेस देन लेट्स से 20 और 25 एज पर द डॉग्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सो दैट कोई unexpected value आपके डेटा में ना आए, like somebody has just as a joke has written 500, so that वो cases करने के लिए you can have a if condition also here, another if condition here. So आपने इसमें like you are passing in a new age, and इसमें basically जो भी हमने उसकी वैल्यू है वो सेट कर दी, दैट इज दी प्राइवेट वेरिएबल है एज, वो हमने सेट कर दिया. देन वी क्रिएटेड another method, and उसमें we are returning this age of the dog. So let me, so basically ये जो age एट्रीब्यूट है ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर, बट वी कैन सेट इट्स, बट इसकी वैल्यू हम गेट कर सकते हैं. सो क्लास के बाहर हम एक्सेस करके इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. ओनली वे टू मॉडिफाई दिस इज यूजिंग सेट एज, right? So let me just run this example, and if you see here यहाँ पे क्या किया हमने, dog का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एंड उसमें वी हैव डन दी सेट एज एज 2, राइट? एंड उसके बाद वी आर जस्ट प्रिंटिंग दी एज यूजिंग दिस गेट एज. सो इस केस में इट शुड गिव यू, या सो यू कैन सी एज 2 दिया है, राइट? बट लेट्स से आई वांट टू, लेट्स से इफ आई ट्राई कि अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एज, तो आप वो नहीं कर पाएंगे, ये आपको एरर देगा कि लाइक दिस, बिकॉज वो प्राइवेट वेरिएबल है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड दिस क्लास. बट इट वॉज नॉट द केस ओवर हेयर. यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है, वी हैव क्रिएटेड नेम. सो इफ वी डू, सो माई एनिमल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, इसमें हमने एक नेम एट्रीब्यूट लिया था. सो अगर हम यहाँ पे अगर माई एनिमल डॉट नेम करते हैं, सो वो आपको नेम रिटर्न कर देगा. सो ये जो नेम वेरिएबल एट्रीब्यूट है ये एक्सेसिबल है, इसको हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर. बट दिस वन इनकैप्सुलेट, अगर कोई प्राइवेट वेरिएबल हमने क्रिएट किया, सो उस केस में सिर्फ हम विद इन दी क्लास के अंदर ही मेथड के थ्रू हम उसको मॉडिफाई एंड एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड प्राइवेट वेरिएबल. एंड द होल आइडिया ऑफ एनकैप्सुलेशन इज जो भी हमारा डेटा एट्रीब्यूट एंड मेथड्स हैं, एवरीथिंग शुड बी प्रेजेंट विद इन वन यूनिट, राइट? सो दैट इज जो सो फार हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट इज यू कैन सी वो सेम जो एक कंसेप्ट है इम्प्लीमेंट करता है क्लास. सो जो भी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डेटा है वो उसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रहती है. इफ वी क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, क्लास का हमने दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हमने क्रिएट किया, सो उसकी खुद की यूनिक डेटा होगा,
और द लाइक इट्स उसकी खुद की यूनिक मेमोरी लोकेशन होगी, लाइक एवरीथिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. सो ऑल जो भी उसका डेटा होगा वो विद इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, एंड सेकंड जो भी ऑब्जेक्ट है उसका यूनिक डेटा विद इन दैट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा. So this was the idea of encapsulation. And उसके बाद we have the last and but not the least is abstraction, जो कि but before that I'll just quickly look at the chat, कोई भी आपको doubt है or anything, and then we can continue to our last topic of the day, that is abstraction. Anyone has any doubt, please feel free to add it in the. All right, so let me move to the next topic, that is abstraction. सो पाइथन में पहले एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, देन वील मूव टू पाइथन में कैसे हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं. सो एब्स्ट्रैक्शन इज बेसिकली जो भी सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हाइड करना एंड ओनली फोकस ऑन द नो इसेंशियल डिटेल. लाइक आपके पास एक कार है, सो कार के अंदर यू ओनली नीड टू नो कि आपको उसको स्टार्ट करना है, एंड देन यू हैव टू नो पुट इन अ गियर एंड गियर डाला, देन एक्सलेटर दबाया, एंड देन यू कैन नो ड्राइव द कार. सो लाइक पर्सन जो भी आपको कार ड्राइव करनी है, आपको लाइक यू नीड टू नो दीज डिटेल्स, बट आपको ये डिटेल लाइक यू डू नॉट नीड टू नो कि अंदर इंटरनली व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द बैक इन द बैकग्राउंड, लाइक कार वो एक्चुअली में कैसे रन हो रही है, हाउ इज द इंजन रिस्पॉन्डिंग, स्टार्ट प्रेस करने पे अंदर क्या हो रहा है. सो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी यू डू नॉट नीड टू नो दोज कॉम्प्लेक्सिटी, बट यू नीड टू नो ओनली द इसेंशियल डिटेल, जो भी यूजर रिलेटेड डिटेल है. You only need to know those details, and you do not need to know the actual system complexity. So that is the main idea behind abstraction, कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लाइक आपकी एक वेबसाइट है, आपको बैकग्राउंड पे उस पर क्या लॉजिक लगा है वो सब आपको यू डू नॉट नीड टू सी दोज डिटेल्स. आपको सिर्फ यू ओनली नीड टू सी दैट दिस इज द पिक्चर माई फ्रेंड हैज़ अपलोडेड, and you can like it, share it, and do different types of activity on that website. But you do not know कि जो भी आप एक्टिविटी और इवेंट कर रहे हैं उस वेबसाइट पे, उसके बाद बैकग्राउंड पे बैकएंड पे क्या हो रहा है. सो एब्स्ट्रैक्शन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, और जो भी इसेंशियल डिटेल है, कोई भी जो भी स्पेसिफिक डिटेल है जो यूजर को नीड टू नो है, सिर्फ वो नीड टू नो वाली डिटेल्स यूजर शुड नो दैट, right? So in Python classes, there's a ABC module, ABC जो module है, that is used for creating abstract class. So इसको आप basically import कर सकते हैं in your code if you want to create abstract class, और आपको abstraction का concept implement करना है in your library. So बिकॉज डायरेक्टली लाइक अभी तक हमने जो भी कंसेप्ट डिस्कस किए थे दैट कैन बी implemented directly, but for abstraction only, python में if you want to create an abstract method or abstract class, or you need to like import this. So that is the abc module. abc module के अंदर there is a class, base class abc करके name है, and then we have this abstract method as well in that abc uh, in this abc module. So let's just discuss कि हमने इसको कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करी, एंड सी हाउ इज द derived क्लास इम्प्लीमेंटेड. सो हमने ये बेस क्लास क्रिएट की, दैट इज द शेप. इस शेप के अंदर वी आर इनहेरिटिंग दिस एबीसी जो क्लास है, इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं, दैट इज टू मेक दिस क्लास एब्स्ट्रैक्ट. अब इसके अंदर वी हैव क्रिएटेड टू मेथड्स, दैट इज कैलकुलेट एरिया एंड गेट इन्फो. सो एज यू कैन सी यहाँ पे गेट इन्फो, दिस इज अ जेनेरिक मैसेज कि आई एम अ शेप. एक जेनेरिक मेथड हमने जस्ट लाइक इंट्रो हमने एनिमल में क्रिएट किया था, वैसे ही यहाँ पे जेनेरिक हमने एक गेट इन्फो मेथड क्रिएट किया है. एंड देन उसके अलावा देयर इज अनदर मेथड दैट इज कैलकुलेट एरिया. सो कैलकुलेट एरिया को हमने
एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया है. सो बेसिकली जो भी आप इसकी शेप की सब क्लास क्रिएट करेंगे, आपको इसमें एंड उसमें आप ये शेप क्लास इनहेरिट करेंगे. सो यू विल हैव टू प्रोवाइड कैलकुलेट एरिया का इम्प्लीमेंटेशन. सो आपने यहाँ पे कैलकुलेट एरिया डिफाइन कर दिया है. सो बेसिकली जब भी आप कोई भी शेप क्लास का शेप बेस क्लास की डिराइव क्लास क्रिएट करेंगे, सो आपको जो भी उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे वो क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको उसमें प्रोवाइड करनी होगी, राइट. सो मैंने लाइक आई created this square class. Square is a type of a shape. So उसमें हमने shape जो क्लास है बेस क्लास इनहेरिट करी. एंड बेसिकली स्क्वायर में वी आर जस्ट इनिशियलाइजेशन में वी आर जस्ट टेकिंग द साइड ऑफ द स्क्वायर जो यूजर प्रोवाइड करेगा. एंड सिंस स्क्वायर का जो कैलकुलेट एरिया है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था हमारा, एब्स्ट्रैक्ट वो बेस क्लास में, दैट इज इसको हमने डिराइव लाइक वी हैव given its own implementation in the derived class. So as you can see, the square का area जो calculation that is this, like length square basically. So this is self, we are just multiplying, doing the square of the length and returning that. And same way जब हमने circle जो है सब क्लास क्रिएट करी, एंड सेम वे उसमें हमने लाइक रेडियस लिया एंड देन वी आर इम्प्लीमेंटिंग द कैलकुलेट एरिया सेम वे जो जैसे हमने स्क्वायर में किया था. सो इसमें एंड देन द पॉलीमॉर्फिज्म एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था उनमें डिफरेंस क्या है, लाइक पॉलीमॉर्फि सिंस ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सो इट इज कंपल्सरी टू नो गिव इट्स नो इम्प्लीमेंटेशन. जो भी आप डिराइव्ड क्लास करेंगे, अगर बेस क्लास में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सो इट्स कंपल्सरी कि आप डिराइव्ड क्लास में उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करें. एंड बट इन केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म और लाइक अदर कंसेप्ट, वो वहाँ पे कंपल्सरी नहीं था कि आपको कुछ ना कुछ उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है या नहीं. सो इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड इट इज ऑलवेज कंपल्सरी. लेट्स से मेरे पास अगर यहाँ पे दो मेथड होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं, सो वो दोनों मेथड आपको हर एक डिराइव्ड क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी होती. It is all like always compulsory. You cannot leave their implementation blank, right? So let me just run this example. Running the cell 1, then running the cell 2. So if you see here, इसको separate कर लेते हैं. Okay, so firstly हम क्या किया, like just run this cell जो भी है, shape is an abstract class, then square and circle. We have created two more classes, that is the derived class or subclasses you can say. And see square का हमने object create किया and we are passing जो length of square है 5. And same way हमने circle का एक object create किया और हम उसकी length पास कर radius पास कर रहे हैं, that is 3. And see सबसे पहले जो स्क्वायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें वी आर कॉलिंग द गेट इन्फो एंड देन द कैलकुलेट एरिया. सो एज यू कैन सी गेट इन्फो में इट इज प्रिंटिंग आई एम अ शेप एंड देन कैलकुलेट एरिया में इट इज प्रिंटिंग दिस 25 जो कि 5 स्क्वायर जो आपकी एरिया है ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफ योर दिस स्क्वायर. सेम वे अगर हम सर्कल का एग्जीक्यूट करते हैं, सर्कल का जो ऑब्जेक्ट है, we execute this, so you can see the get info is printing this I am a shape, and then calculate area में you can see the pi r square के formula के according you can get its uh, this area, right. अगर मैंने यहाँ से किसी में भी this हटा दिया this calculate area method, then it's going to give you an error. Let's say let me rerun this. So let you can see जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड सो आपको एरर आया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कैलकुलेट एरिया, वो इसको लाइक इट कैन नॉट फाइंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, राइट. सो जो भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड क्रिएट करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन यू हैव टू प्रोवाइड इन योर सब क्लास. लेट मी जस्ट put it back and just rerun.
राइट. सो ये बेसिकली यहाँ पे नन क्यों दे रहा है बीच में? सो लाइक व्हेन यू कैलकुलेट द एरिया, सो इट इज यू कैन सी कैलकुलेट एरिया जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड पे जब ये जाता है, इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, दिस इज बेसिकली जस्ट पास, यहाँ पे कुछ कोड नहीं है. एंड राइट. एंड फाइनली तो वो वहाँ पे नन प्रिंट करता है, एंड देन फाइनली व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल एरिया जो भी आपकी डिराइव्ड क्लास में है, देन इट्स पासिंग द एक्चुअल एरिया, राइट. सो दिस वाज ऑल जो आज मुझे डिस्कस करना था. आई कम टू द लाइव चैट अगर कोई किसी को क्वेरीज है एंड डाउट्स है, एंड विल डिस्कस दैट. एंड बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल you about tomorrow's class. So tomorrow we are going to have class on the some important data science libraries जो Python में they are, that are widely used. And so those libraries are the, like we are going to discuss about the pandas, numpy, and some of the data visualization library, and run the code as like in parallel, and you can see the various ways कि आप data manipulation कर सकते हैं, and you can do the data visualization. So make sure to join us for tomorrow's class. And yeah, I look forward to seeing you all there. And I'll just come to the live chat now. अगर किसी को कोई भी डाउट है, please add it in the chat itself. And I'm here for 2-3 more minutes, and we can discuss your doubts and queries. And yeah, in the next week, after tomorrow's class, we have also have next week's class, जिसमें हम पाइथन की कोई भी well, we'll discuss the Python's live case study, एक live practical example के साथ. And we will also have a quiz. We'll also share with you the final quiz जो भी हमारी that is related to all the जो भी हमने classes की हैं अभी तक, live classes related to that. We have one quiz, and you know, whosoever like gets the maximum answers right, they can look forward to uh, getting some surprise gift from our team. And we look forward to see more and more participants willing to upskill themselves in the field of data science. And also, if you have any queries related to this Python data science, or just about your query or your careers in this field, and how you can upskill yourself, please feel free to connect with us. And you can join us on you can follow us on Infinite Data Academy LinkedIn channel as well. We are very active on all our social media handles, so it will be great to see you all there. And see new enthusiastic learners. So I'm here for 1 more minute, and please, if anybody has any doubt, please add it in the chat itself, and we can discuss those queries. Else, I wish you all very good night, and see you all in next class. I've just pasted the our company's website and uh, LinkedIn links in the URL. Feel free to visit them and reach out to us. And I see there are no queries as of now. So yeah, before next class, if you have any queries, so please feel free to jot down your points, and then we'll connect in the next class and see how different types of data science libraries, and how we can manipulate and visualize data. And I look forward to seeing you all in tomorrow's class, and have a very good evening. Goodbye, everyone.